Namaskar, welcome once again to our show In Our Teens, a show that brings together parents, teenagers, and experts to help us understand the remarkable journey of teenage. Someone who nurtures young minds, someone who helps understand others to bring out their true potential. Someone so special in our guest chair today, Mrs. Binal Soni, a global career counselor from the University of California, a certified career analyst from Edu Milestones, and also someone who's done her master's in career counselling and computer application. आज बात करेंगे उनसे कि किस तरह से टीनेजर्स को अपने करियर्स को चुनना है, किस तरह की गाइडेंस की उनको जरूरत होती है, करियर काउंसलर कौन होते हैं, ये किस तरह से टीनेजर्स को गाइड करते हैं, इस बारे में जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में. Hi Binal and welcome to our show In Our Teens. Thank you so much, Manasi, for having me. It's a pleasure and a privilege to be here. Yes, आप इतनी बिजी हैं, आप अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए आपने वक्त निकाला है, so thank you so much for that. Pleasure is all. In our teens कई ऐसे टीनेजर्स देखते हैं जिन्हें करियर के लिए गाइडेंस चाहिए होता है फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड वी थॉट कि क्यों ना हम आपको बुलाएं ताकि सारे करियर्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए. एक करियर को किस तरह से अप्रोच करते हैं ये भी बहुत जरूरी है. तो विनू, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि व्हाट इज करियर काउंसलिंग, क्या है करियर काउंसलिंग और क्या रोल होता है करियर काउंसलर का. To start with, career counseling actually it's an art and science of understanding yourself. Career counseling हमें मदद करता है हम कैसे हैं, ऐसी हमारी पर्सनालिटी क्या है. जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ सही या गलत नहीं होता, उसमें it's just about who we are as a person. एक जो स्पेक्ट्रम होता है पर्सनालिटी को, उसमें हम कहाँ खड़े हैं. एंड करियर काउंसलिंग विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हमारे जैसे कौन से करियर्स हैं. अगर मैं पसंद करती हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करूँ और मैं ऐसा करियर चूज़ करती हूँ जहाँ लोग ही नहीं है, जहाँ मैं सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, तो वो इवेंचुअली ऑफकोर्स पैसा एक दूसरी बात है, बट इवेंचुअली वो एक जॉब सेटिस्फैक्शन जो हैप्पीनेस एक करियर देता है वो नहीं मिल पाएगा. एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन एंड देयर इज सम कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे में जो एक नीड होती है. एंड जहाँ तक मेरा मानना है, करियर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है. करेक्ट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो करियर को जानें और वो करियर हमारे जैसा हो वही चूज़ करें. सो करियर काउंसलिंग एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हम किन चीज़ों में अच्छे हैं, rather than just picking anything जो भी हमारे इंटरनेट कह रहा है, जो अभी बहुत चल रहा है, वो करियर ऑप्शंस के अलावा हम क्या चूज़ कर सकते हैं जो हमारे जैसा है और किसके साथ मेरी बनेगी एज अ करियर. क्योंकि करियर के साथ बनना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स मच बियॉन्ड देन अ फ्रेंडशिप, मच बियॉन्ड देन अ मैरिज. सो आई फील दैट करियर से दोस्ती और करियर से प्यार होना बहुत ज़रूरी है. तो मैम, आपने जो ये कहा इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं लेकिन साथ ही में आपकी पर्सनालिटी के साथ जो जेल करे वो करियर आपको चूज करना है. बिल्कुल करेक्ट. सो मैम, आप एक करियर काउंसलर हैं. सो जब बच्चे इस स्टेज पे होते हैं कि उन्हें अपना एक करियर चूज करना है, तो इसमें आपका रोल क्या होता है, एक करियर काउंसलर का रोल क्या होता है इंडिविजुअल की जिंदगी में कि वो एक राइट पाथ जो उसके साथ जिंदगी भर रहने वाला है. So I'm sure it's a crucial role of a career counselor. तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? करियर काउंसलिंग जब हम कहते हैं और पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग जब कहते हैं, उससे क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग यू. तो हम जब अंडरस्टैंड करते हैं तो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे मोडालिटीज़ होते हैं. जैसे असेसमेंट्स होते हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट जिसे जनरली लोग एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसे साइकोमेट्रिक असेसमेंट विच इज़ अ complete amalgamation of personality, interest, what you're good at, how you should study. All these things we can understand with the assessment. But assessment होता है एक चीज़. It also is important that as a career counselor, I would want to understand कि वो बच्चा है क्या, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसके पेरेंट्स की क्या बैकग्राउंड है, फैमिली डायनामिक्स क्या है, और ये सारा लेके फिर हम एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि दिस इज़ व्हाट द करियर्स आर पॉसिबल. ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि ये बच्चा फर्स्ट करो मैथ्स में अच्छा नहीं है या उसे मैथ्स पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों उसे एक डिफ़िकल्ट पाथ पे भेजूँ. हालांकि अगर वो अच्छा है पब्लिक स्पीकिंग में, अच्छा है पीपल मैनेजमेंट में, सो वी कैन लुक एट करियर्स जो जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो,
कैपिटलाइज हो उसकी स्ट्रेंथ्स रादर देन जस्ट जो चीज़ें नहीं आती वही सीखो 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 और जब तक नहीं आती सीखते जाओ. करेक्ट. सो इट्स काइंड ऑफ आपका सेल्फ एस्टीम भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है इफ एट ऑल यू आर इनटू दोज करियर्स जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली सीखना पड़ रहा है, आपको नहीं आ रहा है. सो आई फील दैट सिलेक्शन ऑफ करियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ क्रूशियल स्टेज ऑल्सो. क्योंकि हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाते हैं जब एक करियर में, तब बहुत बार लगता है बहुत पैसा बहुत टाइम गया है इसमें, अब कैसे पीछे हटे. करेक्ट. और यही डिसीजन के साथ आज तक मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं 40, 45, 50 and they are not very happy with what they are doing. They're still regretting They're their still choices. regretting कि काश तब मैंने change किया होता. लेकिन आप एक करियर काउंसलर है, अगर लाइक आई एम 43, सो मुझे ऐसा लगता है कि अरे आई हैव डन माय मास्टर्स इन कॉमर्स, सो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि व्हाइट कॉलर जॉब करना है, व्हाइट कॉलर जॉब करना है, पर एक्टर बन गई मैं. कभी कभी एक्टिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अरे काश तभी छोड़ के. तो जब क्या 40 पे भी करियर काउंसलर की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है. सो आई विल जस्ट गिव यू, बिकॉज I was a victim of a wrong career choice. I moved my career at the age of 34. I was a software programmer. I did my master's in computer applications with a graduation in physics. So very, very technical, nothing related to people. And tabhi it was about, you need to have a, successful career and computers was the answer of everything. So I decided, ठीक है, we can move ahead with that. Not that I was forced, but I did not know anything else. So tabhi itna internet भी was also not very prevalent where we used to find out information. We just used to look at books which were what after SSC, what after 10th, what after 12th, and जो selected options available होते थे उसके information मिलती थी, and I went ahead with the best chosen one. At 35 I realized that this really is not my calling. I am a people's person. मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं. I love to help. I love to contribute to the society, and it was completely on the other extreme of computer programming. So that's where I decided to take a break and get into learning again. And I did my master's in counseling psychology after that. So I don't think that there is any time where if you feel that this is not what you want to do, if you don't really look forward, कि आपको ये नहीं लगता है कि yes I have to go to work tomorrow, तो फिर रुक जाओ और सोच लो, क्योंकि at 55, 60, 65 you will always feel that I wish I had shifted at that time. Yes. और मे बी बहुत सालों तक अब ये कर लिया, नाउ देयर इज अ टाइम टू शिफ्ट द पैराडाइम. करेक्ट. सो शिफ्टिंग करियर्स आई वुड ऑलवेज से दैट एक रिसर्च होना चाहिए उस पर. ऐसे नहीं कि जस्ट मन किया शिफ्टिंग. यस, एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट्स वेयर अ करियर काउंसलर कम्स इन, कि आप कौन हो और आप जो भी कर रहे हो वो आपकी सिमिलैरिटी में है भी कि नहीं, और आप जो कर रहे हो अगर वो सिमिलैरिटी में है तो आपको कुछ शायद और स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि आप उसमें बेटर कर पाओ. करेक्ट. आप बोर नहीं हो. उसमें कैसे हम वैरायटी ऐड कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ simple courses which are possible, a couple of months, and you kind of have a better edge in whatever you are doing. So I always feel that more than careers, it is important that we keep learning whenever and whatever age we are into. Updating yourself. जैसे जिस तरह से हम मोबाइल अपडेट करते हैं, आप अपने आप को भी मिलती हुई इंफॉर्मेशन से अपडेट करते रहें. करेक्ट. ताकि पता चले कि नए नए एवेन्यूज क्या हैं. बिल्कुल. सो मैम, जब आपने ये करियर शिफ्ट का सोचा, जैसे बहुत सारे टीनेजर्स भी 2022 तक एक करियर के बारे में पीछे भागते रहते हैं, फिर सोचते नहीं अब ये मेरे लिए नहीं है, आई वांट टू शिफ्ट. तभी बहुत बार पेरेंटल प्रेशर होता है. प्रेशर इस बात का भी होता है कि अभी इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई, अब और दूसरी चीज में कैसे इन्वेस्टमेंट करें. मतलब पेरेंट्स का ये थॉट प्रोसेस है जो भी बिल्कुल सही है. तो क्या ये करियर शिफ्ट एट एनी एज, प्रोबेबली 22 और 35 और 45, ये प्रेशर्स को कितना महत्व देना चाहिए? How sometimes we do succumb to these pressures. Absolutely. Because finance is a big part of every human life. True. तो ये कैसे इसमें हम एक बैलेंस स्ट्राइक करें? So जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ये समझती हूँ कि मैंने भी कैसे किया. It was not like a just a knee jerk reaction कि मुझे कल से अभी काउंसलिंग करनी है, ऐसा नहीं था. जहाँ पे मैंने शुरुआत की कि भाई मैं समझती हूँ कि मैं कौन हूँ. जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ दैट ओके आई एम समबडी हु इज अ पीपल्स पर्सन, आई लाइक पीपल, मैंने काफ़ी रिसर्च किया. ऐसे नहीं कि जस्ट कल से शुरू कर दिया. बट हाँ, रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. जहाँ तक फाइनेंस की बात है, मैं ये मानती हूँ कि जब तक एक सेकंड आपकी बोट सेटल नहीं हो जाती तब तक डोंट मूव. करेक्ट.
because it's particularly for people who are in their middle ages, not for students but for people who are in their middle ages, जहाँ पे you are running the house, you are the breadwinners of the Yes. family. तो ये एक knee jerk reaction नहीं होना चाहिए. It should be quite a research done, and I think to a certain extent अगर आपको वो move करना है तो आप ready हो जाओ कि आपको 2 काम करने हैं. Correct. यहाँ का शुरू रखना है और साथ में parallelly you can figure out कि is this for me or no. Correct. And when you start gaining confidence, तब आप shift करिए and take a thoughtful decision. As far as students is considered, I think that learning never goes waste. Okay, I am a software programmer, and when I look at other women my age, I feel that I have a upper edge when it comes to understanding softwares, understanding and getting my work simpler. Correct. But also, it is very important. That's where, career counseling, if you do at a right age, you kind of get an option कि if not this, then at least I have this. I can continue with plan A, लेकिन अगर ये कभी मुझे लगा कि नहीं हो सकता है, तो we will capitalize on plan A के basis पे plan B. So it is important that you have multiple backup plans. Additionally, for parents, I would say that you would never want to see your child unhappy. Yes. The best gift a parent can give is to just teach the child how to be happy. Yes. Career, as far as I understand, I feel that it is very much in resonance should be with your personality. And if it is something where the child has realized, then force will not work. I moved at 35, people will, shayad 40 mein, but Yes. they will always feel that, hey, Bhagwan kal Monday hai. Yes. Yes. So that feeling should not be there. And I would say that, improve on how you choose a career. Correct. Go with the scientific way, talk to people, understand what you're choosing. It is for students and parents. I would say the youngsters nowadays are very, very intelligent and very practical, and they're okay to try out new things. And flexible too. Very flexible. And great adaptability. Lovely adaptability, much, much more than any of the generations. Yes. Yes. So I feel that if you have the computer now, if you have the internet, why are you not researching? Yes. Thinking of moving a career at 22, you could have thought about it at 18 also. Yes. But do your research. Talk to people where you feel that fascination. If I want to become an actor, talk to a couple of people who are into this. So understand what is that profile. मुझे दिन भर काम क्या करना होगा. If you feel that yes, ये मेरे लिए सही है, अगर घंटी बजती है, तो go ahead, explore. Definitely. I strongly feel that exploration should not stop at any age. Yes. And sometimes ground research or being on field and trying your hand at it, Yes. इससे भी काफी फर्क पड़ जाता है. बिल्कुल. विमल, आपने बात करते करते कहा कि plan A and plan B, we should have. We are in an age of multiple sources of income. Correct. आजकल कहा जाता है कि सिर्फ एक source of income से काम नहीं होता. True. So multiple sources of income की प्लानिंग आपको क्या रहता है, किस एज में या बच्चों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि देयर शुड बी ऐसा नहीं कि एक ही करियर पाथ पकड़ के चले. Yes. कुछ पैशन हो उनमें तो उसे भी डेवलप करके अनदर सोर्स ऑफ इनकम वो बना सकते हैं. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स और मल्टीपल करियर्स दैट यू कैन हैव साइमल्टेनियसली? So when it comes to this, I feel that a student should consider something like this after 18, where you kind of are grounded now in a career. Many a times I have seen in my experience that students have taken up odd jobs to help themselves in terms of finances, and they have kind of neglected the academics, neglected the studies. The core is missing out, and they are running behind something which is very temporary. Eventually, after 2-3 years of a high in the finances, they see a dip. Suddenly they feel अब मैं इससे भी बोर हो गया, तो अब मैं क्या करूँ? And up the academics are already going for a toss. Yes. So I feel that by 18, 19, you are kind of quite grounded in what you want to do. And parallelly, I feel that you should explore the world, take the taste of how the world is, and that's where you can increase your skills. Correct. And that's how you get better. The earlier the better, but definitely not before 18. Okay. Yeah. So Vimal, when for my generation, हमारा ये था कि ग्रेजुएशन तक तो सेम ही रूट है. हाँ. ग्रेजुएशन के बाद सोचना है. हाँ. क्या करने का. करेक्ट. जबकि आज के टाइम में ये चेंज हो गया है. आज तो 8th स्टैंडर्ड में IGCSE के 8th ग्रेड में या ICSE के भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन आ जाती है. बिल्कुल. तो मतलब आपकी करियर की शुरुआत अभी 8th ग्रेड से हो रही है. करेक्ट. जो फाइनल ईयर में होती थी. तो इस पे आपके क्या
थॉट्स है? आर वी मूविंग टू अर्ली, जैसे आपने कहा 18 19 17 पे बच्चे दे आर गोइंग टू अनदर कंट्री, तो ये तैयारी, मेंटली तैयारी बच्चों की और फाइनेंशियल तैयारी माँ बाप की कब से शुरू हो जानी चाहिए? आई थिंक बाय ग्रेड 8 you are pretty much clear कि आपकी इंटरेस्ट क्या है और आप किन चीज़ों में अच्छे हो. बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या बच्चे क्लियर होते हैं? पेरेंट्स क्लियर होते हैं. ओके. बिकॉज बचपन से आज तक वो लोग ने देखा है, पेरेंट्स ने देखा है कि कौन से एरियाज में बच्चों को ऐसा लगता है कि एक स्पार्क दिखता है. अभी जैसे पर्सनली फॉर माय डॉटर, when she is with animals, okay, she gets that spark. She does not know the time, she does not understand the time. On Sunday morning, if I tell her kal 6 baje we have to go to feed the dogs, she will be ready. Okay. So little things, if you pay attention bachpan se, you will understand that this is the area. Even if you understand a broad spectrum, it is good enough. But what happens is nowadays people want security. Yes. Okay. Financial security. Financial security and also career security in terms of हमारा कुछ छूटना नहीं चाहिए. Correct. आप 12th तक करो, साइंस करो तो कोई टेंशन नहीं है. अब why we have introduced subject selection in the ICSE or IG boards is that you have varied interests. Why would you not pick up those? Particularly when it comes to sciences and maths, there are children who have difficulties. उनको difficulty होती है remember करने में physics, chemistry, bio के बड़े बड़े words and maths के formula एकदम ऊपर से जाते हैं. तो particularly अगर अपन देखा है कि 5th standard से ये बच्चा struggle ही कर रहा है, तो क्यों नहीं move करते आप? But if you see that हाँ ये बच्चा just उसको आलस है इसलिए उसको कॉमर्स में जाना है, मैं ये नहीं कहती कि कॉमर्स ईजी है, just that the number of subjects थोड़े reduce हो जाते हैं. 3 साइंसेस की पढ़ने के अलावा आप सिर्फ एक कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. बट अगर आपको लग रहा है कि बच्चा सिर्फ आउट ऑफ बोर्डम इज सिलेक्टिंग कॉमर्स, देन दैट्स वेयर अ करियर काउंसलर के साथ एक टॉक इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. Also, when a child understands physics or understands chemistry, it is a very different perspective. The brain looks at numbers, looks at tables, looks at text in a very different way. And it differs from student to student. Student to student. So it's very important that you meet a coach who helps you understand that. कि अगर आप एक long text है तो आप उसे कैसे याद रखोगे? There are tricks where you can manipulate your brain to focus better, remember better, and recollect better. So the children needs to learn all of that, right? So little things here and there where we actually can make a difference. Additionally, एक subjects की तरफ hated हो जाता है from more often than not the teacher. Yeah. If that passion is not inculcated at a young age, they feel that नहीं यार ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं. हालांकि आप वो सारा कुछ करते हो जो वो सब्जेक्ट में है, लेकिन वो सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है. So at that time an intervention is required that what is not going well. Probably जिस तरह से वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है वो that was not friendly. Correct. कि एक डर ही बैठ गया उसका. हाँ. जैसे मैथ्स का इंट्रोड्यूस होने से पहले ही डर हो जाता है. बिल्कुल. Yeah. So ma'am, इधर what are your thoughts on aptitude test? Aptitude test. Okay, so aptitude test is basically a skill test. What I would want to call it is a psychometric test, which is a complete amalgamation of personality and interest, aptitude, and how do you study things. So it's ये multiple choice रहता है? Yes, it is a multiple choice question. Aptitude test एक क्या होता है कि हमें एक personality की broad spectrum understanding मिलती है that where are you falling, where are you going closer to, areas where how are you when you handling a group project, how are you when it working with people, how are you when it comes to time management. आपके project submission last दिन बनते हैं कि आप properly plan करते हैं. Correct. How are you when it comes to handling an audience. So everything is very different and every career has its own personality. So it's important that there's somebody who, let's say we talk about marketing. For marketing you would require somebody who understands numbers. लेकिन लोगों के दिमाग में ये है कि marketing is घर घर जाके बेचना. हाँ. But it is very different. Sales and marketing are very, very different things. Marketing is more about strategies, making strategies how things will sell. But sales is actually, targets, reaching out, being the go-getter. You require that for the sales thing. So there's a clear demarcation which you need to understand. And that's where we understand that through an aptitude test. Okay.
And that's how you help them. So aptitude test is the basic first step that you take, the primary Correct. step. Primary step is the aptitude test because that's where a student gives information about themselves unbiased. और aptitude test देने के लिए right age group क्या है आपके हिसाब से? When it comes to career selection, Mansi, I would say that the right age would be 8th grade when you are looking at choosing a stream ahead. Correct. But your brain completely develops by 16, 15 or 16. Where Okay. you are ready that now what is going to be the next step. Correct. So aptitude test, I would say that you should need to take at regular intervals to just understand what is the next milestone I have to clear. Oh, so this is Yes. this is not just one time. Aptitude is not, this cannot give you assurance because your skills keep on changing. Yes. You naturally get better at certain things. When you keep on studying physics, you get better at it. When you keep on doing maths, you get better at it. So your skills also have a great impact on what careers you choose. Correct. Right? I was somebody who used to fail in maths, but by 8th grade, I kind of really conquered it, and I was like almost reaching towards the full marks. Okay. So it is, you need to have a gradual understanding. Definitely, you are not somebody who would be the same person as you were in your 8th grade. Yes. So 8th, 10th, 12th, regular testing is very important as a person because also you change slight in terms of your personality. Correct. Your friends change, your social influence changes. So it's important that we take it at regular intervals just to know that, this is how we are going ahead and we are on the right track or not. So if 35 और 40 पे भी अगर हम करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं क्या तभी हमें एप्टीट्यूड टेस्ट से ले लेना चाहिए? एक लेना चाहिए. एप्टीट्यूड में होता है कि बाय 35-40 आपकी स्किल्स काफी बन चुकी हैं. करेक्ट. यू आर सम सर्टेन एरिया यू आर क्वाइट गुड एट. ओके. वो ज्यादा चेंज नहीं होंगे, बट वी वुड नीड टू अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट. करेक्ट. ऑल्सो योर इमोशनल क्वोशेंट. Is it nicer for your own self to understand कि आप कहाँ हैं, आप क्या हैं, आप क्या बन चुके हैं? बिल्कुल. हाँ. So personal assessment. Personal assessment. Actually, self discovery is something which Yes. Assessment will give you, and there are a lot of assessments available on the internet. Okay, आप टाइप करो और आपको मिल जाएगा, and you can go ahead with that. But what happens is when it comes to those assessments, those are not like highly reliable and valid. They have not gone through the research. They Correct. have not gone through multiple testing phases. So it's better that you reach out to somebody who knows to read those tests and also do those tests. Correct. So once the report comes in, every counselor will interpret it differently. Okay. So it's very important that you understand whom you're going to be talking to, who understands the craft of their work. So जैसे कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए थेरेपिस्ट होता है, आई थिंक आपके करियर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसे समझने के लिए करियर काउंसलर है. Right. Am I putting it in right words? Perfectly. करेक्ट. दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने 8th ग्रेड कहा, मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है करियर का इज बोर्ड सिलेक्शन. करेक्ट. कि हम कौन सा बोर्ड चुने, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, आईबी. अभी तो ये 4 बोर्ड्स अवेलेबल हैं. साथ ही साथ में होम स्कूलिंग भी अवेलेबल है. करेक्ट. तो आप ये चॉइसेस को मतलब व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कि बोर्ड सिलेक्शन? Okay. So overall, let me first talk about the 4 boards which are available, and then I'll talk about the homeschooling. First, let's talk about the very prevalent and the old board of India, which is CBSE. CBSE is a board which has a lot of schools, like around, if I'm not mistaken, 16,000 schools across India. Okay. This board is very helpful for people who have transferable jobs. Correct. Okay, so if at all you're into a government business and आपका shift होते रहता है, तो then a CBSE board makes more sense. Additionally, if your child is preparing for Indian entrance exams, Correct. particularly which are engineering, medical, architecture, law, which are memory-based entrance exams, उनके लिए perfect है CBSE. मतलब उस सीबीएसई का करिकुलम सपोर्ट करता है. सपोर्ट करता है. The way they teach, the way they remember things supports the clearance of the entrance exam. Okay. CBSE focuses more on maths and science. CBSE is something who provide a more of a conceptual learning when it comes to theory and less of practical. मतलब concepts clear हो जाते हैं, particularly maths and science. English, other academic areas और other extracurriculars पे इतना focus नहीं होता. Okay.
Now the second board, which is also very prevalent in India, which is ICSE, it's a pretty much Indian board, but Yeah. out of the Indian boards, we call it an international board. Correct. Because has a better edge when it comes to adapting to international colleges, which is ICSE. Correct. Now ICSE has somewhere around 2,000 to 2,300 schools across India, and इतना मार्जिन है, मतलब हाँ. CBSE के 16,000 है और ICSE के राइट. सो ये काफी लेट बना है. करेक्ट. एडिशनली ये एक टुगेदरनेस है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द एंग्लो इंडियन गवर्नमेंट. अच्छा. जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका मैथ्स एंड साइंस पे तो फोकस है ही, बट ऑल्सो इट गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस, रादर आई वुड से मोर इम्पोर्टेंस टू इंग्लिश languages. Okay, so here when it comes to CBSE, it's maths and science, and when it comes to ICSE, it's maths, science, and English also. ICSE also gives you, offers you a way where you can choose your subjects at a pretty early stage, which is the 8th grade. Yeah. 8th grade. So in 8th grade, you kind of have a test and you understand that which way you want to go, math, science, or commerce, or it is humanities. You take arts and all of that. Now the third board, which is IB board. Okay, IB board की schools India में सबसे कम है. It is still getting there. Yeah, it's new. It's still getting, yeah, very new. IB board is good when you have I would say better financial status, Yes. when you can pay the fees. Yes. IB board is beneficial for students who are looking forward to joining or going abroad after their 12th grade. When I say abroad, particularly United States and Canada. IB board will be more helpful when you're looking at having an overall growth, a holistic approach towards learning. When it comes to IB board, they would not give you rather any textbooks. They would tell you that you do your research on your own, find it out on your way. They would tell you a story and put you as a character there and think about what you would have done differently. Yes. So they really elevate the critical thinking approach of a child. How, if at all, you are into this situation, what would you do? So they teach the child to think. What happens is when it comes to the Indian children, there is a difficulty in adapting to that because वो parents ने वैसे सीखा नहीं है. So it gets very difficult for them to adapt. Additionally, the better part here is that they will give you inclusion of sports, emotional quotient, financial literacy, music, creativity, all of that into your curriculum itself. Correct. So they have more hours at school, but it is all inclusive. You don't need to have any extra classes for anything more. Now comes in the Cambridge board. Cambridge board also has less schools, but more as compared to IB. Yeah. But Cambridge board is and little less expensive than IB, right? So it is less expensive. It is also gives you a very holistic approach. Excellent board when it comes to adapting to Indian boards and also going internationally. Okay, so if the parent is not sure कि भाई मुझे पता नहीं क्या करना है, तो they generally go with the IG board. Again, IG board definitely is more expensive as compared to the CBSE and ICSE versus the IB. So IG board stands somewhere in the middle. Correct. When it comes to IG board, they offer a lot of subject choices. Around 70 subjects में से आप choose कर सकते हैं. I think around 6-8 subjects आप choose कर सकते हैं. So it is the groups. Yeah. Okay. They have an excellent a subject called Global Perspectives, Yes. where they understand how a child behaves in a team, how do you work in a group project, how do you look at the challenges which the world faces. So I feel that these little things are very important to study and very important to learn. और curriculum current है. Current happenings को लेके पढ़ाते हैं. बिल्कुल. So when it comes to choosing a board, I would say ये थोड़ा late पता चलता है. Because when you say that I want to put my child into IG board, वो as far as मेरा understanding है, it is just you taking a decision based on how much you can pay to the start with. Yes. But as and when you understand how the child is coping up, how the child is adjusting to that board, you will understand that is it right or no. And if you look at shifting a board, ideally it should be done by 7th or 8th latest. जैसे IG में check points होते हैं. Yes. I think एक 6th में है और एक not very familiar with it. Correct. But check points है जहाँ पे आप I think वो आपको बताते हैं कि सोच लें आप एक बार. कि आपको आगे कहीं पे जाना है. It is it's very important to get that testing done. Yeah. So when it comes to an Indian board, I would say that if you're not looking at medical or engineering as your eventual career option, ICSE is a good
good way to choose from. And if at all you are okay to travel, if you're okay to have that spending power, then even IG is a good option. Yeah. So choice of the schools actually, it's also, you know, to understand that how you are looking at your career also, because parents sometimes हमको ही नहीं पता कि हम कहाँ होंगे. Yes. So then it gets very difficult. Yes. So I would suggest that to settle with the middle options rather than looking at the extremes. So my parents जब board select करते हैं तो 20% को पता होता है कि क्या करना है पेरेंट्स को और बच्चों को. 50% सिलेक्ट करते हैं ये सोच के कि आईसीएसई में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, बहुत ज्यादा पोर्शन है, और आईजीसीएसई में एनालिटिकल है तो इतना प्रेशर नहीं रहेगा. और बच्चे में 30% ये सोचते हैं कि आईजी और आईबी में जब हम बताते हैं कि मेरा बच्चा आईबी और आईजी में पढ़ता है तो अपने आप में एक अपना एप्टीट्यूड अच्छा हो जाता है. सो क्या आप इसे मानती हैं कि ये प्रेशर जो ये समझ रहे हैं कि आईसीएसई का प्रेशर ज्यादा है और आईजी का प्रेशर कम है, क्या ये सही है? नहीं. कोई भी स्कूल या कोई भी बोर्ड आप ले लीजिए, आई थिंक प्रेशर हम डिसाइड करते हैं. प्रेशर तब लगता है जब हमारे पास उस चीज़ की एप्टीट्यूड कम है. अगर मुझे आई हेट मैथ्स एंड साइंस एंड आई एम फोर्स टू डू इट, तो वो प्रेशर डेफिनेटली लगेगा. करेक्ट. कितनी भी अच्छी टीचर, कितने भी क्लासेस आपने करवा ली है, वो डिफिकल्ट लगेगा. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हम ये सोचें कि हम बच्चे को कैसे हेल्प कर पाए बाय अंडरस्टैंडिंग द टीचर, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द चाइल्ड इज़. देखिए, बाय 7th स्टैंडर्ड अगर आपने अपने बच्चे को क्लोजली देखा है तो आपको समझ आएगा कि इसको बुक से नफरत है, ये पढ़ती भी है कि नहीं, इसको कलर्स अच्छे लगते हैं या ऐसे क्या अच्छा लगता है, या इज इट द स्पोर्ट्स विच द चाइल्ड वांट्स टू डू. सो उसके हिसाब से देन यू कैन डेफिनेटली थिंक एंड मूव, बिकॉज बाय 8 आइडियली यू शुड मूव. करेक्ट. Many a times from Indian boards to international boards, children are able to cope up, but not the other way around. Okay. Because from an international board, if you have taught to not do rote learning, to not read and by heart things, you will not be able to adjust to an Indian board. So it gets very difficult. So it's better that, you know, by 8th grade, see a career counselor, see somebody who can help you out. Talk to teachers, you know, they are the best guide to, because they have seen the children very closely. Okay. So you can understand that which board to select by discussing and talking to people. Correct. And to you, आपके बच्चे से भी बिल्कुल, मतलब बच्चों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है. हाँ. 7th तक बिल्कुल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक मूवी देख के आता है बच्चा, तो अगर आप इनके क्वेश्चन पूछते हो कि अगर आप इनके जगह पे क्या होते, अगर करते होते तो क्या करते, तो बच्चा कैसे जवाब देता है उस पर भी हमें सोचना है कि इज इट द चाइल्ड इंक्लाइंड टू थिंक डिफरेंट. करेक्ट. Okay, if the child is completely okay with the academics, with the books, go ahead with the Indian boards, no issues at all. If the child is okay to go in the outdoor and learn, then maybe IB or IG curriculum will fit better. Correct. So we have to understand how the child learns also. Correct. So ये बोर्ड पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके बच्चे पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना चाहिए. Correct. ना कि आप not even on your financial standing. No. Is completely on the child's aptitude. Absolutely. कि उसे किस बोर्ड में हम कोच करें. बिल्कुल. पोस्ट कोविड काफी पेरेंट्स ने एक नया अप्रोच अपनाया जो काफी वेस्टर्न कंट्रीज में फेमस था, वो था होम स्कूलिंग. Right. What are your thoughts on homeschooling? Homeschooling is a fabulous thing. Really? It is amazing because you are allowing the child to choose what subjects you want to study. Okay. But it's like a double-edged sword. The thing is that if the parents don't have enough time to put behind the child, to figure out, to constantly keep the child occupied, then there is a difficulty. Because I have seen some students who are into homeschooling, they have kind of completely shifted from academics. They are moved toward purely sports. So that is not what I would suggest at such a young age. I would say that sure, you can, experience success in sports, but don't completely quit academics. Parents have to be very, very involved when it comes to the schooling of the child. Homeschooling will only support if at all you are invested in your child. Correct. Which subjects to pick, which teachers to pick, it has to be micromanaged by the parent. If you don't have the time, don't even try. पर ये होम स्कूलिंग की डिग्री की कितनी मान्यता है? So, क्या होता है कि होम स्कूलिंग में इवेंचुअली जब आपको 10th देना होता है तो आपको एक बोर्ड सिलेक्ट करके वो स्कूल में एग्जाम देना होता है. अच्छा.
So आपने पढ़ाई जैसे भी की हो, if you have to still follow a basic curriculum of any particular board, it could be CBSE, ICSE, IG or IB. You have to get enrolled or associated with a school where you will go and give your 10th examination. Okay. And that's where the eventual thing starts. You get the certificate from the board and all of that. Correct. So that's how it works. मैम अभी हमारे भारत देश में स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा मान्यता है एंड बच्चे अभी ग्लोबली सब कुछ पढ़ते हैं, जैसे सेरेना और वीनस विलियम्स ने पढ़ाई छोड़ के सिर्फ लॉन टेनिस पे कॉन्सेंट्रेट किया, सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट किया। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप होम स्कूलिंग करके, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का एप्टीट्यूड स्पोर्ट्स में है या किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में है, तो इज इट राइट कि थोड़ा एकेडमिक्स को साइड में रख के हम उसे उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन में उसके ऊपर ध्यान दें? राइट, इट इज पॉसिबल, बट व्हेन आई से they are Sachin Tendulkar is like 1 in a million. Correct. Okay, so we have to understand that is a child getting that training to reach there. If you feel that the child has determination and will do anything to get there, then please push. Do what is required. Even if you look at an open schooling like NIOS, which is an open school, okay, where you choose your subjects, where you have complete flexibility. You can go with that board also and not get into homeschooling if you feel that you don't have time. Okay. So we can have a lot of things are available now, which the parents are kind of unaware. So better research, talk to people, talk to teachers, talk to counselors, where they can help you choose and make the right decision for your child. Okay. So things are definitely available. We can look at sports also as a career option nowadays. It's a great thing. It's a great thing. Yeah, and also the country is promoting it in a big way. Absolutely, yes. ऑल्सो मैम, क्योंकि हम अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट हो गया है, हम जो भी करते हैं, अगर हम सोशल मीडिया पे भी कुछ डालते हैं तो वो ग्लोबली सब जगह फैल जाता है। Right. तो ऐसे सिनेरियो में क्या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या थोड़े कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस का टच या प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, जैसे फ्रेंच, मैंडरिन, स्पेनिश? See, of course, it is about the interest, not what you have to do. Okay. अगर आपका लिटरेचर का इंटरेस्ट अच्छा है, where you like to read, where you like to try out different languages, please explore. It always helps or definitely gives you an upper edge. Okay. But when it comes to purely focusing a career into a language, it is not very rewarding. Of course, there are jobs available and they will continue to be there, like teaching है, translators है. But in the world of AI, ये jobs gradually कम होती जाएंगी. So it should not be like you're banking on this career only as your main core career, but having learning some new language definitely creates a new neuronal circuit in your brain where you learn things in a different way and you keep what you know, like English आपको अच्छे से आती है, लेकिन आप उसको साइड पे रख के जब फ्रेंच सीखते हो तो एक नया सर्किट बनता है which makes you more intelligent. Okay. So it makes your literature part of the brain more active and more dominant. And I feel that when it comes to globalization, and if you see all careers are now scattered across the globe, any language, any additional language it is always better. Okay. It's always a good thing. बट एडिशनल लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन के लिए या मैम एडिशनल लैंग्वेज जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो अगर कोई बच्चा है जो MBA फ्रेंच में करना चाहता है या जर्मन में करना चाहता है, तो क्या इससे प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस खुलते हैं? थोड़े से कम हो जाते हैं, because if you are only looking at German, then you will be called working only if at all you are working in Germany or France for that matter. But if you want to be a global citizen, then it gets a little difficult, to eventually get the long-term career planning. Okay. So English should definitely be there. Yeah.